So, magnetic effect of current. You see, whenever a current flow in a conductor, then around it a magnetic field is produced. Say this is a current carrying wire, then around it a magnetic field is produced. The magnetic field can be the directional magnetic field can be found with the help of thumb rule. If thumb and your wire coincide, then the finger in circle give you the direction of magnetic field. Around a current carrying conductor, a magnetic field exists. So here it's x-axis, y-axis, and z-axis. Let a charge particle shown here with the blue. Let the charge of the charge particle is q. It is moving at an angle theta with velocity v in xz plane. It's moving on the xz plane like this. It is not at some angle. It is at an angle of theta with x-axis, but it is moving on the plane xz. This plane xz, and the magnetic field exists in the direction of x-axis. Magnetic field exists in along x-axis. Then the force, you see, we already told that around a current carrying conductor a magnetic field exists, and the motion of charge particle is considered equivalent to the current carrying conductor. When we say a wire containing current, we know very well that in fact electrons are moving in the opposite direction. Here you see a charge particle is moving. It is also equivalent to a current carrying conductor. Now further, as the charge is in motion, it's like a current carrying conductor, so it will produce a magnetic field. And there is a one more magnetic field B. Both the magnetic field will interact. We know na ki south and south repel, north and south attract. The same, there are two magnetic fields now. One magnetic field is parent magnetic field B, and other magnetic field produced by the motion of charge particle. So that interaction of magnetic field produce a force on the charge particle, and that force will be proportional to the charge of charge particle. Means V is proportional to Q. That force is proportional to the component of velocity perpendicular to the magnetic field. Now this V has two components, V cos theta and V sin theta, but in formula only V sin theta will play a role. And the third is what? It is proportional to strength of magnetic field. So when you combine all these points, combine 1, 2, 3. So you get F is equal to Q V sin theta B. So F is equal to QVB sin theta. So this is the formula of force. The force is equal to F is equal to QVB sin theta. Note down. So
So F is equal to Q VB sin theta. So F is equal to Q V cross B. I guess you know the basics. If it's a vector A along x-axis, vector B along y-axis, where is the A cross B? How to find A cross B? You simply move your hand A to B. Right hand, your finger in circle should be from A to B. And then check the direction of thumb. Do it by your own. Yes, सब लोग करो जरा इसको. Move your finger from A to B. A to B. So where is your thumb? Thumb is coming outside. So it's what? A cross B will be outward. It will be outward. Now, can you find the direction here? Yes, here. What is the direction of force? Along y-axis. Downward, upward? Upward. Yes. When you move the finger from V to B, when you move the finger from V to B, V to B. You see here is it is a V here, V, and then B is somewhere here, V to B. Where the thumb point outward. आप लोगों को ना खुद करना पड़ेगा, सिर्फ देखने से नहीं बनेगा. सिर्फ देखो मत, खुद करके भी बताओ. अपने फिंगर को घुमाओ, हैंड को मूव करो V to B. चाहे नोटबुक पे करो या कहीं भी करो, पर करोगे तो समझ आ जाएगा. So the direction of force will be in this direction. Upward. Therefore, direction of force will be upward. That is along y-axis. Direction of F can be obtained by right hand screw rule. ये जो हम फिंगर इन सर्कल कर रहे हैं, ये राइट हैंड स्क्रू रूल ही है.
देखो जरा जो स्क्रू रूल है यही है ना. So what is the screw rules? Say you are having a right hand screw drawn here. It has a vector. When you rotate the screw from A to B, then the direction in which the screw progress in linear direction will indicate A cross B. You have to rotate the screw from A to B. The linear progression will indicate A cross B. So when we move like this, A to B, screw will move upward. That will be the direction of A cross B. Now the case we were discussing, you see, just suppose a screw, it's a V and it is B. We have to move the screw from V to B. If it is a V here, and this is B here, the force will be again upward. The F will be Q V cross B in the upward direction. So you draw this also. हो गया? Done? Yes, no? No, sir. Done, sir. नमनूर हो गया? Yes, sir. Further. Definition of B. As F is equal to Q V B sin theta. When V is 1, Q is 1, theta is 90 degree, then B is equal to F अब हम ना डेफिनेशन ऑफ बी निकाल रहे हैं. Thus magnetic field induction
और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी at a point in the magnetic field is equal to force experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to direction of magnetic field at that point. ये है द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एक ही बात है, जिसको हम बी बोल रहे हैं। ये दोनों चीजें वही हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट in the magnetic field is equal to force experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to direction of magnetic field at that point. सेम चीज है। मीन्स एफ इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा है। अगर आपके पास देखो ना, आपके पास Q1 है, V1 है, साइन 91 है, तो एफ और बी बराबर हो गए ना। वही आपने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity। सब कुछ वही, सब कुछ सेम लिखा हूं। क्लियर है ये डेफिनेशन? और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि हमने पूरी डेरिवेशन ही इसको निकालने के लिए की है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और कहीं भी कुछ नहीं दी हुई, सिर्फ यहां पर ही दी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अगर पेपर में आ जाए डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से डेफिनेशन आएगी। स्पेशल केसेस, फर्स्ट इफ थीटा इज 0 और थीटा 180, कितना हो जाएगा एफ रमन? ऐसे ही बोल दो, मुझे समझ आ जाएगा, आपके लिए प्रीडिंग कर लूंगा। रमन बोल दो आप ऐसे ही, आप वहां बोलो एफ कितना होगा। म्यूट करने में मत जाओ, अनम्यूट मत करो, सारे आपको ही देख रहे हैं इस टाइम। या बोलो कि आई डोंट नो। अब बताओ, स्पॉटलाइट डाल दिया आपको। कितना होगा एफ इफ थीटा इज 0 और थीटा 180 डिग्री? एफ कितना होगा? 1। अभी तो बढ़िया आराम से हो गया। अनम्यूट।
सुखमन कितना होगा? सर QVB अमानत कितना होगा? 0. अच्छा, तुम्हें ये वाली रमन को और सुखमन को ये मालूम नहीं कि साइन 0 0 होता है? तो साइन 0 0 होता है ना बेटे। तो एफ इक्वल टू क्यू वी भी साइन थीटा है। तो व्हाट इज साइन 0? इट्स अ 0। तो इफ थीटा इज 0 और थीटा 180 डिग्री, देन एफ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट इज इफ charge particle is moving parallel to magnetic field, it will feel zero force or no force or nil force, minimum. Special case number 2, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो अन्वेषा कितना हो जाएगा फोर्स? 1. Sorry, QVB. And F is equal to QVB, and that will be maximum. If theta is 273, F is equal to, sir, why do you ask such non-medical questions? Sin 90 I know 1, sin 0 I know it's 0. What about sin 270? आपने बताया ही नहीं मुझे पहले कभी। sin 270 is -1 हो जाएगा माइनस QVB। Jashan, if V is 0, that is charge particle is at rest. Zero. Yes. F is equal to 0 if that is charge particle at rest. Feel no force. तो उसको कोई फोर्स नहीं मिलने वाली इसको तो। Unit of B is Tesla. Unit of B is Tesla. Is it okay? Yes, sir. बस तुम मुझे अगर डायमेंशन ऑफ बी निकाल दो, आज तो टॉपर हो। जो स्टूडेंट डायमेंशन ऑफ बी निकाले विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल, वो टॉपर है।
Sir, Newton second per coulomb meter. कौन सी शादी अटेंड करके आई है गरिमा? अभी तक वापिस नहीं आ पाई तू वहां से? अब वापिस आ जाओ। डायमेंशन पूछा, यूनिट नहीं पूछा। यूनिट ऑलरेडी आ चुका है, टेस्ला। शर्म क्यों आ रही है तेरे को? गलत आंसर भी तो नहीं दिया है। कर रहे हैं सर। डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन। यूनिट तो ऑलरेडी टेस्ला हो गया। टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा हुआ है। यस प्रिया, बता दे, शाबाश, बन जाए टॉपर। Sir, M A minus 1 and T minus 1. T-1, M-A-1, T-1। थोड़ी मिस्टेक है कहीं, काफी क्लोज है बट स्टिल मिस्टेक है। Sir, ML-1 T-2 A. M आगे क्या बोला है अन्वेषा? ML-1 T-2 A. नो, वेस्ट बंगाल और दुबई तो गया। अब पंजाब वालों तुम छा जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, MT-2 A-1. यस, मेरा राजपुरा, राजपुरा जिंदाबाद। So it's what Garima told the right answer. M-A-1 T-2। Good. F is equal to Q V B sin थीटा। हालांकि ये भी बहुत क्लोज थी अन्वेष प्रिया, तो हमें B निकालना था। B is equal to F upon QV। F is equal to M L T-2। अब I क्या है? Q by T। तो Q क्या है? IT। तो ये हो गया AT। V क्या है? LT-1। तो यहां से हो जाना चाहिए था आंसर तो, और बहुत इजीली दिख भी रहा है हमें तो। ये L और ये L कट गए, ये T और T-1 कट गए, बाकी तो क्या बचा? M A-1 T-2। वेरी गुड गरिमा। कुछ तो पल्ले पड़ी आवाज, ऐसी बात नहीं। इजी था ना आज का चैप्टर। तो यहां से हमने स्टार्ट किया। अगर 5 लाइन में बताना हो इसको, तो छोटे ब्रदर को बताना हो आपको, तो क्या है? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फील अ फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फर्स्ट लाइन ये होगी। देन यूनिट क्या है? टेस्ला। बी के डायमेंशन MT-2 A-1। और बस, और क्या? तुम बताओ, तुमने क्या सीखा? एक एक लाइन बतानी तुमने, सबको एक एक लाइन बतानी है कि क्या क्या सीखा। यस, ये सुखमन क्या सीखा आज फुल लेक्चर में? So force is equal to QVB sin theta. रमन? Unit Tesla. यूनिट इज टेस्ला। ओके। अमानत?
Sir, when theta is equals to 0, then f is also is equal to 0. Anvesha, Sir, when theta is 90, then magnetic field is equals to the force. And when Q is equals to 1 and V is equals to 1. Ashneet, Sir, if charge is at rest, then it will feel no force. That is F is equals to 0. Moksh, Sir, B is the magnetic field along x-axis of the wire. B is what? What are you telling? B is Magnetic field around Huh. the wire. B is. Please repeat again. B is The magnetic field along the wire. not audible. You're not audible. We are able to hear only that B is then dash 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 dash. आगे सुनता नहीं हमें कुछ भी. Speak again. Hello, sir, आवाज आ रही है? एकदम आ रही है. So B is magnetic field along the wire. B is the magnetic field along the wire. Along the x-axis of the wire. But इसमें हमने सीखा क्या है? What is the learning in this? Next time B along y-axis भी हो सकती है, B along z-axis भी हो सकती है, then accordingly change हो जाएगा. ये तो given है ना. B stand for magnetic field, and in the derivation we took it along the x-axis. But what is the learning here? Like Ashneet said कि theta 90 है, Anvisha said theta 0 है, Ramandeep ने कुछ और बताया. वो learning है, ये learning नहीं है मोक्ष. आप ये कह सकते हो कि the direction of F can be obtained with the help of right hand screw rule. Navnoor, Sir, when theta is 270, then force will be minus. right. Jashan, Sir, when a force experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular direction of magnetic field at that point, it is equal to magnetic field. Sriya, So the motion of a charged particle is like a current carrying conductor. right. Garima, Electric field and magnetic field are perpendicular to each other. electric field and magnetic field are perpendicular to each other. ये मैंने कब बोला है? डेरिवेशन में था जो हमने एग्जांपल दिया. कौन सी शीट में दे रहा है, एक बार बताना मुझे जरा. इसमें नहीं सर, जो डायग्राम था ग्राफ वाला. कौन सा वाला बेटे? गरिमा, मैं सारे ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, देखो सारे दिखा रहा हूँ. सबसे ये वाला. हाँ, बी और एफ परपेंडिकुलर है. B और F परपेंडिकुलर, बट आपने कुछ और बोला है वहां पर. अभी रिकॉर्डिंग हो रही है. आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आपको बोलना चाहिए था द फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं. बिल्कुल यस, राइट. पिया, Sir, F is equal to Q V vector cross B vector. राइट राइट राइट. रमन, तूने मोबाइल से कर लिया लॉगिन? क्या हो गया? Yes sir, लैपटॉप की बैटरी. ओके ओके, ठीक है. और बताओ कैसे क्या करें? टेल समथिंग. हम लोग भी सारे एग्जाम हो जाए फिर अपन चलेंगे सब लोग ओमान. ओमान ना, दुबई के ओमान. व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ द
place? Salalah, Oman. In Oman, Salalah. Oman, Salalah. Salalah is the name of the city? Yes, sir. Salalah, Oman. Oman is the name of the country. Yes, sir. Is it capital of Oman? No. There's another city called Muscat, which is the capital of Oman. Okay. How big is your Oman? Is it big country or small country? Not very big, sir. सब Pretty लोग small. तो एग्जाम दे लो तुम लोग, सब लोग फिर चलते हैं आपका। Sure, sir. तो ओमान नहीं तो फिर हम सिलीगुड़ी तो हो ही आएंगे। मोक्ष यार इन सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी और समवेयर एल्स? जलपाईगुड़ी। हाँ, जलपाईगुड़ी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है जलपाईगुड़ी। आप देखो कि क्योंकि वहां पर बहुत जल गिरता है। इज इट दिस ना? बहुत बारिश होती है। हाँ, बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। आई वाज कंडक्टिंग अ प्रोग्राम इन जलपाईगुड़ी, so it was a huge stadium. तो जब बारिश होती थी ना तो इट्स लाइक मींस आई वाज हैविंग अ गुड साउंड सिस्टम आल्सो, बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम लगाया था उन्होंने। बट जब बारिश होती थी तो आप बोल नहीं सकते कुछ भी, बिकॉज इतनी ज्यादा तेज बारिश होती है, इतनी आवाज आती है उसकी कि आपके साउंड सिस्टम भी फेल है उसके आगे। जलपाईगुड़ी में स्टेडियम है ना एक, वहां पर अपना प्रोग्राम हुआ था, ह्यूज स्टेडियम है। तो वो जलपाईगुड़ी एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट, उसमें कहाँ से नहीं, जलपाईगुड़ी नहीं, जलपाईगुड़ी इज डिस्ट्रिक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर जलपाईगुड़ी सिटी। तो स्टेडियम को नहीं पता इतना बड़ा। जलपाईगुड़ी के आउटर में वो भी तो है ना बीएसएफ का कुछ। यस यस। You people stayed there? You people stay there or not? I know about that. But I have not yes. been. And I conducted one session in that BSF also. वैसे वो पूरी गन वगैरह लेके मुझे लेके गए थे साथ में, तो आसपास के लोग कह रहे थे क्या हो गया। यस, गुड, जलपाईगुड़ी इज अ गुड प्लेस। वहां पर एक पास में फॉरेस्ट भी है ना जहाँ पर एलिफेंट दिखते हैं कुछ। एक नहीं, हर जगह फॉरेस्ट है। हाँ, एलिफेंट्स भी है। देखो मैंने पूरा इतना तुम्हें जलपाईगुड़ी के बारे में बता दिया, तो एक प्लान तो कर ही सकते हैं। अन्वेषा कहाँ चली गई आज? अन्वेषा आप कहाँ हो? आपका कहाँ, कौन सी जगह? Sir, I am very near to Kolkata, Bardhaman, that side. तो शी इज सेइंग सर आई एम वेरी नियर टू द जलपाईगुड़ी, बस तुम सिर्फ मोक्ष के पास आ जाना, खाना वाना वहाँ खाना, और इवनिंग टी के लिए हमारे पास आ जाना। ठीक है अन्वेषा, अभी ठीक है, आप हमें रसगुल्ला खिला देना, हम रसगुल्ला खाने आएंगे आपके पास। ओके Sure, sir. ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं फिर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.